Hello, everyone. Good morning. We are right at 11 o'clock, and I am welcoming all of you on this small training again. Hi, Anshulji. Hi, Aniruddha. Hope you all are doing good. So, if you can just switch on your cameras, let's talk and let's start the training. Yeah, yeah. Good morning, Anshulji. Good to see you. Good How about morning. you, Aniruddha? How are you doing? Hope things are doing well. कैसा चल रहा है आपका? Yes, Aniruddha. Can you hear me? कैसा चल रहा है? यस सर, बढ़िया चल रहा है सर। गुड गुड गुड। आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, मुझे समझ नहीं आता क्या सर चल रहा है। थोड़ा मेडिकल इश्यूज हो गए पिछले मंथ में, अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी अभी वजह सब से। ठीक है? ऑल गुड? ठीक है। नाइस, गुड। So once again, welcome everyone. Today the topic of this training is, again, I do short trainings. Everybody, you must be knowing short trainings for half an hour approximately, and then half an hour is the Q&A. Anything which you relates to your business, you can ask questions. So the topic for the day is how you can build trust and close more deals. Everybody wants business, right? And business will come through closing deals, which is sales. Marketing is one part ahead of it, where you do branding and all those things, and ultimately it closes down to sales. So how you are going to build trust so that you can close more deals, that's the topic of the day, and this is what I'm going to cover. So welcome, Himanshu. Good to see you. I think you are there for the very first time. If you can just switch on your camera and interact, that would be great. Himanshu, are you there? Okay, कोई बात नहीं. So we'll start immediately without any further delay with the topic, which is how to build trust and close more deals. Okay. So let me ask you this simple question, which I already have written as: trust is not built by what you say, right? Trust is earned, correct? Trust is earned. Do you agree to me? Trust is earned. Trust cannot be bought with money. Trust cannot be bought by words. Trust is something which can be created only by your actions and the results, right? Do you agree to it? Right. Now, when I say trust, it's not about we talking only good about ourselves. Definitely, everybody will talk good about yourself. But the third person, who is not me and not you, the third person would like to know what exactly you are doing, and they'll not trust you when you say something about good, right? So a third person wants to listen
from somebody else about what you do and how you do. That's how you build better trust, right? To do this, the best thing on the social media is your social proofs. Because let's say I'm a coach, definitely I'll be talking good about me, like what I have been doing, how I'm giving results to my audience. That's one part of it where I'm marketing myself. But the trust doesn't happen like this. This is one very small component of the entire trust building. Trust building happens when, let's say, Aniruddha or Anshulji or Coach Himanshu, he talks about me saying that, okay, I, used Alok's services and I got benefited. That works better. You can relate to it, right? So that is where social proofs comes into play. So now understand, when I say building trust, there could be n number of process to build trust. But the fastest and the best way to build trust is social proof, leveraging social proofs, right? So this is the topic of the day, how you're going to leverage your social proof to build more trust and close more deals, right? So let's talk about social proof. What do you mean by social proof? Social proof is a psychological phenomenon, right? That is being used for building trust and credibility. And why this is working, why social proofs work phenomenal in the minds of the people, because we human have a tendency to follow others, right? If let's say 100 people are going to one temple, then we definitely try to see somebody, so many people are going to that temple, why not we go to that temple? Or let's say somebody is using iPhone, why don't I use iPhone if I can afford? So people have a tendency to follow a group of people. This is human behavior, right? So that is why social proof is important. Now let's talk about the 6 ways to use social proof to build trust and boost sales, right? Now, I'll give you an example. I'll ask you a simple question. Like, have you ever wondered, like, your friends are recommending one movie. भाई, ये मूवी बड़ी अच्छी है, जाके देख ले. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके दोस्त ने बोला, भाई, ये मूवी बड़ी अच्छी है, जाके देख ले, और आप गए हो देखने के लिए? ऐसा होता है ना? करेक्ट? या मान लो आपको कार ही खरीदना है और आपके फ्रेंड्स सर्कल में लाइक से किसी ने एक पर्टिकुलर मॉडल की कार खरीदी, अरे भाई ये कार तो बहुत अच्छी है, यू ट्राई दिस, तो आप खरीदते हो, जाते हो ना? So what is happening here? This is a marketing point of view. Again, this is a social proof. Somebody is giving you proof that they have utilized that product and service, which is doing good. So you buy that marketing point of view from them and you take a decision on that behalf, right? Correct? So now I'll tell you, this is a research which not I have done. I keep studying and I keep data collection from other resources. They say that there is a company called Power Reviews. It says that 99% of the customers read reviews when they are shopping online. Through, let's say, we are also doing shopping online, Amazon, Flipkart, eBay, and there are other Myntra and other stuff, right? We go and see reviews. Do you see or not? Do you see reviews before buying anything? Yes. Why? Because we want to know why these people have bought. What is their experience, right? So again, this is what a social proof, right? So it depends how much you are familiar and how much you are satisfied with other people who have already used the product. Correct? So that's a review, that's a study which has been done by this company, which says about this. Now let's talk about why social proof matters for your business. Right? We have been talking about creating trust through social proof, right? So why social proof matters a lot? So social proof heavily influence the decision making. As I have already been discussing, this is the topic of the day. So maybe I'll be repeating multiple times. Social proofs influence our decision making. What we do think before buying something. हम सोचते हैं ना, 50 बार कुछ भी खरीदने के पहले हम सोचते हैं. तो क्या होता है, ये सोशल प्रूफ हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है कि अच्छा, इतने सारे लोगों ने खरीदा है और इनके लिए वर्क कर रहा है, तो मेरे लिए भी वर्क करेगा, राइट? सो डिसीजन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. Now let's talk about some data and statistics. It's not about what I'm saying, it's about how the worldwide data talks about it. So let's talk about some data which I have collected from internet again. So there are 3 data which I'm going to share with you. People are saying, the data says that 67% of the websites which have a review, they have higher conversion rates, right? People who are selling through websites, I'm talking about website as of now, right? So on the websites, if people have given review,
the conversion rate is higher by 67% than a website which doesn't have a review. See the difference. 67% is a huge number, right? Similarly, the next data says that 83% of Americans are more likely to purchase a product or service if they are recommended by a friend or a relative. Again, here, what is happening? The trust is getting shared. Somebody is referring somebody, some product or service. And now the third is 77% of the people say that watching a testimonial video has helped them buying a product and service. Again, what is a testimonial video? A person who is talking about your product and services in their words. So that becomes a testimonial video. So the data says that 77% of the people, they are highly influenced by the testimonial videos which you show to your audience, right? And that influences the decision making, right? Is it making sense? The data is talking all about. It's not about what I'm saying. I've been using it. I'll show you how I'm using all these things. But this is the worldwide data which has been gathered for here to represent. Now, let's understand two primary reasons behind this, trust building and this leveraging social proofs. The number one reason is psychological impact on decision making, which is purchasing decision, right? So what happens is I have broken into three parts. So the psychology of social proof lies in a tendency to look at others or for guidance when we are not certain. Let's say we are certain that today we are going to buy, let's say, a pair of shoes. We know I need to buy a Puma shoes or a Nike shoes or an Action shoes, whatever brand you want to buy. You go and prepare a mind because you are 100% convinced, right? You go and you buy immediately. Now, if you are not certain, what you will be doing? You'll be trying to get help of somebody. So this social proofs again has been broken down into three key aspects. Number one is conformity, number two is belonging, and number three is trust, right? So conformity talks about fitting in, following the crowd. Again, as I said, people want to follow the majority of the people. So if you see that there are a lot of people who are buying, let's say, for example, a pair of Nike shoes, right? So you'll go and buy because you know Nike is a branded company and it will suit my budget as well. You go and buy, right? Belonging is taking action when things align with their values and belief. Now, Nike says, there is a story behind the Nike brand. They said, just do it, right? You must have seen that brand tick. So you relate to the belief of that particular brand. So you feel belonging, that you relate to what mission they have, correct? So when you use the Nike shoes, you will be able to do whatever. So this is a belief, this is a story which relates to you. And the trust is the opinion of others while making decisions. So many people are worldwide buying, let's say, Nike shoes. So definitely there is something good about it. So all these 3 points relates to what? The psychological impact on making a purchase decision. And it also utilizes the principle of FOMO, which is fear of missing out. If you don't buy, you'll be missing on something which the entire world is using, right? So that kind of FOMO is being generated uh, through the help of social proofs, correct? Now, the second point, building in trust and credibility with potential customers. So every purchase decision happens when the customer is having trust in you, right? So how this social proofs create trust and credibility, that is what it is showing here. So this social proof definitely helps trust and credibility. So when you witness that somebody has already used that product and they have got results, they have found value in it, the risk which you have in your mind get reduced. Am I right? जब आप देखते हो कि यार 4 लोगों ने बोला यार मूवी अच्छी है, तो आपका मूवी पसंद आने की जो रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपको तो यार इतने सारे मेरे दोस्तों को अच्छी लगी है, तो देयर इज अ चांस कि मुझे भी अच्छी लगेगी, तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है और आप जाके कहते हो चल भाई चल देखते हैं मूवी, होता है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट टूल फॉर इंक्रीजिंग ऑथेंटिसिटी। आपने उस चीज की ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट किया बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक गुड अबाउट इट, राइट? So positive brand mentions, again, there are similar other things which I'm going to cover, the 6 points, how we are going to do it, right? So now let's talk about the 6 methods which I will talk about, how you are going to use your social proof to elevate your brand trust and increase sales, right? So number 1 is leveraging real-time customer feedback. Now I'm going to show you how I have been leveraging all this strategies, you can say, into my business. So when I say leveraging real time, let's say you are working with a customer, right? And customer got some results. You create a real time customer feedback
like what I have shown here, right? There is a client of mine who has sent me a message that, okay, thank you so much, my mentor. I remembered in July last year, I had lost hope, but after having a 1 hour call with me, now she is doing lot of things and she is really happy in her life, right? So what is this? This is a real time customer feedback which I got, and now I'm showcasing it on my social media to leverage this trust. I'm showing my social proof that this is what I have done. And studies also shows that 69% of a customer would buy from a business if they have a written or prescribed positive experiences, right? Have you ever realized this thing? And have you done this? If you're not, this is a good time for you to understand how you're going to leverage this social proofs. So number one, which I told out, leveraging real-time customer feedback, right? This is one example of it, which I have shown here. Now let's talk about integrating social proof into the customer journey. So now you are working with a customer. Customer might definitely, if the customer has come to you, they might be having some challenges. Now, after working with you, they have got results. They have overcome their challenges. So you have to integrate the social proof into their customer journey, right? So how you can do it? You can use this journey as you may be using it in your social proof in ads, showcasing your testimonials in ads, Google targeting ads or Facebook ads or whatever. That is the awareness stage. Second is consideration stage, where you put your social proof on your website or in your email marketing, so that your customer is directly understanding the power of that and they are relating with you. And the third is decision stage. Let's say you have a checkout page when you are selling something. When the customer is gonna make a decision on the checkout page, normally we are doing it everything online, right? So we have a checkout page, right? So on the checkout page, put a social proof. So at that time, it also triggers the customer's mind that whatever they are going to take a decision in favor of, that is really good, right? So that way you can have this integrating social proof into the customer journey. Right now, I've shown you one of I'm showing you one of my posts where I have shown the customer journey of one of my clients. He joined with me. Let's say this is 1 year back. He joined with me in March 23. Then April, what happened? June, what happened? July, what happened? And how he is doing it. So this is a post which I created on my social media, and I created a post here as well, like how Wahab made his first sale of $497 within 30 days. So there is a journey which I have shown here, that the somebody was struggling with something. That person came to me. I started working with him. I started guiding him, and with the guidance, now that person had got results. So there is a journey here shown, right? When the customer journey is shown, the client relates it with more, right? It feels like, okay, yes, I'm into that situation. Even my journey could be like this. I can go from this problem area to a success area, right? So this is point number two. Is it clear how you're going to show your how you're going to integrate your social proof to the customer journey, right? Okay, let's go to the third point. Showcasing success stories with the detailed matrix. Now data is a powerful source of evidence, right? हम लोग कुछ भी बातें कर लेते हैं, whatever we talk, that's okay. But if your talk is backed by some data, right? What I have been doing is, मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिखाया ना, कि इतना परसेंट ये होता है, इतना परसेंट ये होता है. ये क्या है? डेटा है. Data, supports whatever you are talking. So whenever you are creating a social proof, why don't you do something which talks about the data? So when you showcase success stories with detailed metrics with data, your power increases actually. It becomes a powerful social proof rather than just saying, like, I did something. So anybody can lie like that, right? Anybody can put a lie comment or a false false post saying that, okay, I have done this. But when you show some specific data with social proofs, again, social proof also needs some data to give you an exact number for the people to have better reliability and trust, right? That gives a better thing. So the matrices which you display on your social media also helps. Now let me tell you, this is one of the posts which I did. I have I created a post that how my client Taiba made 1.8K dollars in just 15 days. This is what I have made a post that I could have made false as well. But it has been backed by her own text, which where she has praised me, saying that, okay,
this is indeed from the bottom of my heart. 3 deals of $600 have already been done for this month. So now it's not about what I am talking. Whatever I am talking, I am giving a backup data here, right? So that becomes a proof that whatever I'm saying is making sense, right? I'm not lying actually. So again, a proof and a backup of that proof is there. Is it making sense? Right? So the third one, which as I'm showing, showcasing success stories with detailed metrics, this is what I'm trying to talk about, that anything which you are saying should be backed by some data. So this is the data which my client has sent me as a text, and that data I'm showcasing it as a proof to what I'm saying, right? Make sense? Okay. Now coming to the fourth point, which is leveraging industry expert endorsements. Now I'm not going to read all this, but I'm just going to tell you that in this digital age, social media marketing is one of the vital things where we are growing and succeeding. Now, when you are being endorsed by an industry experts about whatever service you are doing, that makes things even better. So I'm going to show you how I have done it. So you must be knowing I have been mentored by my mentor Sahil. Sahil is my mentor, and he has created a post about me when I reached my first 10K. So he gave me an award, right? And he created a post on his timeline, on his profile, saying that, drum roll for my newest coaching client Alok on unlocking his 10K trophy. So what I'm doing is I'm using his platform to showcase my expertise and my research. So I'm leveraging his authority. I'm leveraging his authority, and the same post I did it on my profile as well. So that, let's say he is considered to be one of the industry experts, right? My coach is supposed to be one of the industry experts. So I'm leveraging his platform to showcase my achievements, right? So this is how it works. Is it making sense? So maybe you are working with somebody, you are learning from somewhere. Try to leverage that platform where the industry experts are, right? If they endorse something good for you, that makes better sense for the people to understand and create better social proofs and social trust, right? Now coming to number 5, which is user generated content. What do you mean by user generated content? Anybody? What do you understand by UGC? I call it user generated content. It is a common term. Anybody who can explain what is this UGC? Feedback given by the client. Exactly. This is user talking about you. Now I'll show you what I have done. There is one of my, actually, he was not my paid client, I'll tell you. We had just done a podcast together. And after my podcast, he asked me certain questions, right? After that question, I answered and he got some clues. And later on, he closed the client for $900 and he sent me a text. And this is the text. I've just taken the clip of that from WhatsApp. He says that, just want to express my gratitude towards you because after having an optimistic conversation with you on high ticket model through your podcast, I understand deeply how things work and I manifested the high ticket client of $900. Tons of thanks, Alok, just by implementing the roadmap to get your one high ticket client that we discuss in our podcast. So he's not even my paid customer, I'll tell you, but he created something for me, and he's talking about how I helped him to get a client of $900, right? So this becomes a user generated content where you are not talking anything about it, but the third person is talking about you, right? So that makes a better sense for other people to understand, okay, and I'm openly saying that he is not my paid client. He has not taken my paid services. It was just one podcast which we did together. And after the podcast, he learned something and he implemented and he got results. That becomes a user generated content, right? This is how I'm leveraging my mentor again. Now let's talk about the sixth point, which is highlighting media coverage and awards. Now, to increase your social proof and trust and authority in the minds of the people, you have to do what? You have to showcase whatever media coverage and awards which you have got. Right? Everybody does it. Now, how I am doing? Let's say I got this award in 2022 for Indian Achievers, right? Right. So Entrepreneur of the Year award was given to me. So this is a photograph and the certificate which I got from there, that platform. This event was held in Bangalore, right? Then this image where my coach has given me a trophy when I achieved my first $10,000, right? Then
I have been published at different platforms in the Business Bites, the India Hunt, Entrepreneur Stories, the Bharat Hunt. You can go and check it on my LinkedIn profile. All the links are already there where all these things are published. So I'm showcasing that where all I am there, where all I have been published, where all media has published me, right? Then I got a LinkedIn Top Voice badge. So I have just taken a screenshot of that and I'm showcasing here. Similarly, on Facebook, I got a rising creator and a conversation starter. Any small or big thing which you achieve in your life, you have to showcase these things, build trust and authority in your audience. So when I say highlighting media coverage and awards, any small award which you might be thinking would be small could initiate an inspiration in somebody else's mind, right? So nothing is small in this world. You have to showcase whatever you have to show, right? So all these things you have to showcase in your maybe social profile, maybe in your website if you have, or in your post on your content, right? So these are the 6 points. I'll just recap it again. The 6 points which I told you how you can leverage the social proof. Number one is leveraging real-time customer feedback. Number two is integrating social proof into the customer journey. Number three is showcasing success stories with detailed metrics. Number four is leveraging industry experts' endorsements and partnerships. Number five is utilizing user generated content. And number six is highlighting media coverage and awards. These are the 6 points through which you can, use the social proofs to gather more trust and you can build more, you can close more clients actually, because if the client doesn't trust you, they'll not buy from you. So these were few of the images which I have already done it on my profile, on my social media. Now let's summarize it in this way. What all you have to do is you have to have reviews and rating. You can go and check in on my, social media profile as well as, and also show you this, what do you say? My Google, my business page where I have my reviews, right? So I'll show you Google My Business page where I have reviews. I keep taking reviews from my audience for whatever events I do. So if somebody is going on my Google Business page, they will definitely seeing my reviews. So see, there are reviews here. Uh, 51 people have given reviews and over it is 4.7 stars, right? So you can go and check it, what people have talked about, whatever events or whatever things I have done. So people have written here. So this increases the social awareness and social proof in the minds of the customers, right? So you can have this kind of a thing. Now you have, as I told you, celebrity or influencer endorsement you can do. Try to get endorsed by somebody if they have utilized your services in some way or the other, right? Then what you have to do is you have to have client testimonials. Client testimonials can be, have in different formats. You can have text format, you can have video format, whatever format you can have, you can definitely use that client testimonial. Then user generated content, I already showed you that you can have content from people who have used your services in any way or the other. Again, photo, text, videos will do. Social media shares, try to have this kind of a content which can be shared. Valuable share can be done through people. Media mentions, I showed you how you can have, let's say you've been awarded somewhere, you can showcase that. Success statistics, you can show how many people have been, getting success from your, you can show a data from that as well. And real-time stats, you can say, let's say I have 20 people I'm working with it, out of which 20 to 12 people have, or 15 people have already got results. And obviously video testimonials. Video testimonials are the best way to grab attention for, showcasing your capabilities and trust. So you can use this video testimonials on Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, anywhere you want. So these are the summary which I covered. Now the training part is over and it's all up to you to ask any question if you have. The stage is all yours and I'm there to take any questions if you have. Yes, Anirudh, tell me if you have any questions. सर मेरा दिक्कत ये है कि 2021 में मेरे लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स थे फेसबुक पर, फ्रेंड्स तो छोड़ दो। और उस पर बाद में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने सेक्सुअल कंटेंट डालता है बोल के रिपोर्ट मारा फेसबुक प्रोफाइल को, ओके। और फेसबुक ने वो अकाउंट बंद कर दिया। बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ कर पाया नहीं मैं, क्योंकि फेसबुक का जो हेड ऑफिस है वो यूएस में है।
वहां पर जाना पड़ता है बाकी की चीजें। फिर 2023 में सेम चीज मेरे साथ हुई। उस टाइम लगभग 41,000 फॉलोअर्स थे मेरे अकाउंट पर। तो उस टाइम भी सेम प्रोसेस रिपीट हो गई। फिर सोशल मीडिया से पूरा मैं गायब ही हो गया, और अभी 3-4 महीने पहले नया अकाउंट निकाला है। तो उस पर चालू है, लेकिन मैं लॉक करके रखी है प्रोफाइल। और उस पर भी चीज ऐसी हुई सर कि अभी 6 तारीख को लास्ट मंथ में फिर रिपोर्ट मारा और फिर फेसबुक ने बंद किया था। लेकिन आईडी प्रूफ्स देने के बाद वो प्रोफाइल ऑन हो गई। Okay. हाउ टू सिक्योर द प्रोफाइल? See, although this is not my subject, man, I'll tell you, Facebook has given you a blue tick option, right? यस If you opt for blue tick options, your profile would be better secured rather than the normal one. That is one thing. ओके Secondly, आप ये देखने की कोशिश करो कि कौन लोग हैं ये जो आपके प्रोफाइल पे ये गलत चीजें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा. यस Is somebody intentionally doing it? And if you यस are not यस doing it, Facebook is not going to block your account unless and until you are doing something wrong. नो ऐसा सर, नहीं होगा. नहीं Yeah. सर, मैं एक एनजीओ ओनर हूँ। और Hmm. उस पर जो भी सोशल वर्क था मेरा, उसका सब अपडेट्स आता था। और Right. पॉलिटिक्स में मेरे को जाना नहीं है, या फिर जाने की कोई चीज भी नहीं है। तो True. पॉलिटिक्स में के जो लोग थे वो मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर देते। मैंने अनऑफिशियली वो जो जिन्होंने रिपोर्ट किया था, वो भी अपना जो गवर्नमेंट का साइबर क्राइम सेल रहता है उस पे से निकाले थे डिटेल। Hmm. लेकिन आपका ये ब्लू टिक का ऑप्शन बेटर लग रहा है, लेकिन उसको भी 700-800 रुपए मंथली को देने पड़ते हैं, वो आउट ऑफ बजट है। सी मैं क्या बोलता हूँ. पहला तो ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट यस यस जो मैं जानता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ यस कि अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आप दो तीन चीजें कर सकते हो. और उसमें जो भी है, जैसे मान लीजिए कि जो आपने कहा कि किसी ने प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दिया, यस। कुछ गलत कंटेंट डाल दिया, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग योर अकाउंट, दैट नोबडी शुड बी पुटिंग एनीथिंग आप अपने नो नो, प्रोफाइल पे. या चीज ऐसी थी सर कि मैं कैसे डाल सकता हूँ अकाउंट? लोग 250 बंदे बैठते थे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के, और वो रिपोर्ट मारते थे कि दिस पर्सन इज डूइंग सेक्सुअल कंटेंट ऑन फेसबुक। तो फेसबुक तो एल्गोरिदम पर चलता है, वो देखता नहीं, वेरीफाई नहीं करता कि कैसा है क्या है वो। 250 बंदे एक दफा ही रिपोर्ट मार रहे, तो उसकी वजह से वो अकाउंट ही पूरा ज्यादा गया नहीं. मैं। इफ मान लिया 250 बंदे रिपोर्ट मार रहे हैं, समझ में आ गया, बट फेसबुक आप जब उसको डिस्प्यूट रेज करते हो ना, वो भी तो चेक करेगा ना कि आपके. वो तो है यस ना. यस, बहुत ट्राई किया सर, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, उतना मैम सपोर्ट नहीं हो पाता है. ये हम्म, बात तो सही है. तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए. आपको लगता है कि फेसबुक पे लोग ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो ट्राई टू गो ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, ट्राई यूट्यूब और ट्राई सम अदर थिंग. यस और यस क्या हो सकता है, सी दिस platforms are not governed by us. There is यस somebody else who is owning it, there is somebody who is यस यस doing it, right? अब उनके कुछ एल्गोरिदम हैं, उसके कुछ लोग पॉजिटिवली यूज करते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली यूज करते हैं. उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हम बेस्ट क्या कर सकते हैं वो हमें सोच के करना है. यस यस सर, थैंक यू। ओके. हाउ अबाउट यस शांतला, अंशुल जी, you have any questions? Cosmic divine coach, who is this? Hi Shantala, good morning. Yeah, hello, sir. I just saw like people giving reviews on the page. Like, which page is it? I know like one is Trustpilot, Mm-hmm. and you showed something Google. Yeah, Google My Review. You can create a page on Google, right? It is called Google My Business page, right? Google My Business page, is it? Yes. So you can go, Okay. you can create your account there. You can link it with your normal Google account as well. You can put about your services, and there you have Google a Maps, is it? Google My Business. Google My Business. Yeah, yeah, Okay. right? If you Yeah. put it in the search bar, you will find it. Right. There you Okay. need to create your account like other accounts which you are creating, put your details, and then you can have a review options from there as well. Right. So Okay. you can take out that link, you can share that link with other people to give you a review and ratings. Actually, the star and the text, both the things are there. Okay. Do we need to have a website to do that? Not necessarily. Not Because in necessarily. Trustpilot, when I saw there, the option it was like compulsory, like you need to have a website. Actually, what happens is all these people who are giving you a platform to get reviews, they also want to see that you are in a real business.
right? So Yeah. they have simple criteria that you should be having a website if you're doing digital things, right? So we need to check. Actually, last time when I didn't think it was necessary or compulsory, right? So you can check it. I think it won't be a problem because अभी website creation is not a problem at all. सॉरी अभी Yeah. कंपलसरी कर दिया है सर उन्होंने. अभी कंपल्सरी कर दिया है. यस यस. अच्छा, अभी कंपल्सरी कर दिया है. So you can do a single pager website as well. अब there are so many tools. आप Wix पे जाओ, आप WordPress पे जाओ, आप किसी भी लैंडिंग पेज वाले उस पे जाओ ना, आप एक पेज का भी सिंगल वेबसाइट बना सकते हो और उसका लिंक आप वहां पे डाल दो, आपका Okay. काम हो जाता है यार. So it's better to have in Google business and Trustpilot. Both we can have. Yeah, both you can have, sure. So how will it help? Like, see, like if someone else who wants to just join or something, will they check over there like Google before joining? Like how will they know? Yeah, you never know what people are doing. Number one, let's say we are Yeah. buying something on Amazon, right? Amazon has a number of products. We want to, let's say, buy a t-shirt. Now I'll go and check how is the review of the t-shirt. I'm not going to talk to the But then supplier. below it, the review comes, right? Yes? Yeah, In Amazon and all, see when you Yeah. see the product below itself, you can see the review. But correct. here it is not like that. So if people want to work with you, people will go and explore your social media. They might go to check on the Google. Let's say your business name is XYZ. If they type XYZ, if they are interested to work with you, they'll go and check there. If they go and put it there, they'll find that there is a page and they can check there. So Okay. people who are interested, definitely they'll find ways to, check how much you are worth and how you are doing it, right? Before taking a decision. Right? Yeah. So same way, I'm just trying to tell you, your question is very valid. Let me show you, let me try. Actually, I have not tried it on my own. I'm just trying right here. Let's say I go to Google. Let's say you don't know me as of now, right? But you have heard that I'm doing something and the name of my business is the Business Utopia, right? So I'll type the Business Utopia here. Correct? It is here. Now, the moment I typed in the Business Utopia, since I have a business, Google My Business page, my first thing opens is Google My Business page, right? Did you see what I did? I just Yeah. typed the business name and I clicked on it. It took me to my Google business page because Google also understands the algorithm, why somebody is exploring you, right? So they directly took you to my Google My Business page. And here you see the ratings are already there, 4.7 5-star rating or 4.5-star rating, 51 Google reviews. So if somebody is interested, they can go and check my reviews as well. They'll go and click Yeah. here what people have already talked about it, right? So that way Yeah. people can find and people can find to check now if somebody is interested, right? Okay. That way it is. Yeah. And it is very simple. You don't have to complicate things. Very simple to make it. Okay. Good. Yeah. Thank you. Welcome. Anything else? Anshul ji, I don't remember Cosmic Divine Coach. Who is this? If you can just switch on your camera, please. And let's talk. If you have any questions, please do ask. Yes. Anshul ji, Aniruddha, you have anything to say, talk? Anything related to business? Aniruddha, कैसा चल रहा है आपका business? कैसा चल रहा है? सर अभी फिलहाल तो वेबसाइट में ही स्टक हूँ मैं. अभी नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा. एक अच्छा. प्लेटफॉर्म एक सर ने ऑफर किया है, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, जिसमें सब की है, जो क्लिक फनल्स वगैरह है, उस टाइप का उनका वेबसाइट है. तो नेक्स्ट एक 15 दिन तक हो जाएगा वो. और वो होने के बाद ऑनलाइन सब ट्राई करूंगा करने को. लेकिन दिक्कत ये कि यार ये सर कि एज अ वेल्थ कोच बोल के मार्केट में आऊं, या फिर जो भी मेरी सर्विसेज है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन जर्नी में. आपको पहले डिसाइड करना है आपको क्या करना है. आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ बढ़ना है या फाइनेंशियल कोच बनना है. दोनों तरह की सर्विसेज हैं मार्केट में. ओके. आप एजेंट बन सकते हो, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बेच सकते हो एज एन एजेंट. और दूसरा आप वेल्थ कोच बन सकते हो. वेल्थ कोच बनने के लिए आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच लेना पड़ेगा कि Yes, कोई yes. आपके पास क्यों है. तो यस. आप डिसाइड कर लो. वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इफ यू वांट.
क्योंकि जब तक पहले माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी ना कि आपको करना क्या है, फिर आप करोगे क्या। सर एज अ वेल्थ कोच बोल के फिर प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, जो भी अपने है वो। वेल्थ कोच का मतलब प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है। आप ओके एक सजेशन दे सकते हो, बीइंग अ वेल्थ कोच आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाओ, आपका ओके पैसा बढ़ेगा, राइट। ओके देखो दोनों में फर्क क्या है। यदि आप एजेंट बन के काम करते हो तो आपको पता होगा मेरे पास इस म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड है, आप लोगों को यस। बोलोगे भाई ये म्यूचुअल फंड का ये बेनिफिट है, इसमें आप पैसा लगाओ तो आपको 6 महीने में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इतना आपको आ जाएगा। बट जब आप वेल्थ कोच बनते हो, वेल्थ कोच का मतलब ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बताना है, आपको उनको सजेस्ट करना है कि म्यूचुअल फंड इज वन ऑप्शन वेयर इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन SIP और समथिंग, योर वेल्थ विल ग्रो। नाउ इफ दे कम बैक एंड आस्क यू, वो पूछते हैं कि सर कौन से म्यूचुअल फंड में करूं, तब आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो आपका प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट सेलिंग होगा एज अ कोच। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी जो टूल आप बता रहे थे ना, आई डोंट नो इफ यू आर रेफरिंग टू गो हाई लेवल, GHL की बात कर रहे हो नहीं या नहीं कोई सर, और। मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा सर। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यदि आप टूल को ढूंढ रहे हो ना, हम्म। तो ट्राई एक्सप्लोरिंग GHL, गो हाई लेवल उसका नाम है। यस गो हाई उसका। लेवल इज फार उस फार बेटर देन क्लिक फनल। यस यस सर। आपने एक्सप्लोर किया उसको। हाँ किया है सर। क्योंकि देखो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे ना ऐसे, हम्म, तो फिर क्या होता है कि वो आधी चीजें अधूरी रह जाएंगी, फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो चीजें नहीं होती हैं। लेकिन डायरेक्टली यदि आप इस तरह के कंपनी के साथ जुड़ते हो ना, हु आर डूइंग हम्म, इट वर्ल्ड वाइड, तो हम्म। उनका सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। और दे आर गिविंग मतलब वन पॉइंट सोल्यूशन टू ऑल योर नीड्स। आप उन पे वेबसाइट बना सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, प्रोडक्ट्स बना सकते हो, LMS बना यस यस सकते हो, ई कॉमर्स बना सकते हो। इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ गो हाई लेवल एंड जो ओनर है वो इंडिया के ही है, दिल्ली के। और वो बहुत अच्छे हैं, और सर उन्होंने भी फ्रैंकली अभी सबके सामने बोल रहा हूँ, जो भी मेरा सोशल वर्क उन्होंने देखा है यूट्यूब पर या फिर मेरे इस पर, तो हम्म। उन्होंने वो जो उनका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह है वो कुछ लिया नहीं मेरे से, उन्होंने अच्छा, एज अ गिफ्ट बोल के दिया है। चलो बढ़िया है। और सब खुद ही करके दे रहे हैं सर। चलो गुड है, बढ़िया। मतलब मैंने आपको बता दिया ना कि यस कहाँ यस से आ यस रहा है, यदि उसका कॉपी उन्होंने बनाया है तो ऑब्वियसली चीजें अच्छी होंगी, आप यूज करो यस उसको, है ना। यस गुड। सर। ओके, अंशुल जी, अ, यस। हाँ हाँ आलोक जी, मैं ये कह रहा था जैसे हमारी बात होती है अक्सर मीटिंग्स में, तो हाँ। आप ये एम्फेसाइज करते हो कि मुझे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे मैंने थोड़ा सा 5-6 रील्स बना के डाली हैं अपने इंस्टाग्राम में। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी निश है उससे रिलेटेड मैं अगर सीरियस कंटेंट डालूंगा तो वो लोगों को देखने में इंटरेस्ट कम होगा, बजाय इसके कि अगर उसमें थोड़ा सा मैं तड़का लगा दूं या मेरे अंदर थोड़ा सा ह्यूमर रहता है। राइट। हालांकि वो बिजनेस स्ट्रेस की वजह से मरने के कगार पे है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ह्यूमरस एलिमेंट डाल के अपनी निश से रिलेट करके उस तरह का कंटेंट बनाऊं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लोग बढ़िया है। आजकल बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, भागदौड़ की जिंदगी है। अगर कुछ अच्छा लगेगा, मतलब ह्यूमर से रिलेटेड होगा, उनका माइंड भी फ्रेश होगा और निश्चित से रिलेटेड भी, हेल्थ से रिलेटेड कुछ जाएगा उनके माइंड में, उसको यस, देखने के चांसेस मुझे लगता है ज्यादा है, बजाय कि मैं 2 मिनट की रील बताऊं एकदम सीरियस टॉपिक बोलता रहूं। वो नहीं एग्जैक्टली, देखना। एग्जैक्टली। आपने वो मूवी देखी एंटरटेनमेंट, हाँ। पीपल वांट एंटरटेनमेंट, ये ना इनहेरेंट है हर किसी के इंसान में, हम्म। राइट। तो उसमें क्या होता है ना, हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लोग बोलते नहीं है। बट यदि मैं आपको सीरियस कंटेंट और एक जो आपने बोला ह्यूमर वाला कंटेंट ना, तो आई प्रिफर वॉचिंग ह्यूमर वाला कंटेंट, हम्म। दिस इज बाय डिफॉल्ट। इसीलिए आपने जब कल पोल किया था तो मैंने उसमें ही डाला था कि ह्यूमर वाला ही कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप क्या करो, डू अ टेस्टिंग सिंपल। आप क्या करो, कुछ सीरियस वाले बनाओ, कुछ ह्यूमर वाले बनाओ, देखो दोनों पे क्या एनालिटिक्स बोलता है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग। हम्म। लेट अस सी बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा से बात पता चलेगा ना कि कौन सी चीज आपके यूजर्स को ज्यादा इंगेज कर रही है। ठीक है, राइट। तो दोनों करके देखते हैं और उसमें से जो बेटर परफॉर्म करेगा हम उसको करेंगे। क्योंकि अगेन ये सब्जेक्ट मैटर से भी रिलेट करता है, जैसे आपका हेल्थ निश है, राइट, फिटनेस निश है, तो हो सकता है कि फिटनेस में लोगों को ह्यूमर ज्यादा पसंद आए, हो सकता है ना भी आए, वी डोंट नो, अभी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे ना 10-15
इसका कर लो, 10-15 इसका कर लो, फिर उसका एक बार डेटा एनालाइज कर लो कि हाँ इसका क्या रिस्पॉन्स रहा मेरे यूजर की तरफ से, इसका क्या रिस्पॉन्स रहा। उस रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर हम उस पर फोकस करेंगे जो हमको ज्यादा रिजल्ट देगा, राइट। है ना। मैं हमेशा देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी वांट और व्हाट वी ट्राई टू डू, इट्स अबाउट व्हाट आवर ऑडियंस वांट्स, राइट। सो इफ द ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग, हम वो ज्यादा करेंगे। यदि हम्म ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा और रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम वो नहीं करेंगे। बुद्धिमानी तो यही कहती है ना, और डेटा यही हम्म कहता है। सो लेट्स टॉक विथ डेटा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी डिसीजन हो, यदि डेटा से बैक्ड होता है ना तो वो सही डिसीजन होता है कंपैरेटिवली। जस्ट ओनली यदि मैं थियोरेटिकली बात करूं या अपने गट फीलिंग से बात करूं कि यार ऐसा हो सकता है, उसकी तुलना में हम्म डेटा से बात करूं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, करेक्ट। राइट। तो आप ह्यूमर वाला करिए और दोनों करिए, दोनों मैंने बताया। और मैंने कल आपको ये भी बोला था कि रील इज वन टाइप ऑफ कंटेंट, शॉर्ट वीडियो हम्म कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या होता है ना कि एक ही चीज मैं आपको डेली पनीर ही खिलाऊं ना, या डेली आपको मैं नॉनवेज खिलाऊं, आपको कितना भी पसंद हो तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा वेराइटी फ्रस्ट्रेशन आ उसमें, जाएगा। हाँ थोड़ा सा उसमें वेराइटी डालना पड़ेगा। सो इफ यू आर डूइंग हम्म रील्स, गुड, कीप ऑन डूइंग। एक रील, दो रील आप करते रहिए। एंड हम्म उसके बाद क्या है, उसमें थोड़ा सा दूसरे तरह का कंटेंट भी डालने की कोशिश करिए, है ना। दूसरी तरह का कंटेंट मतलब कुछ टेक्स्ट कंटेंट, जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे, आप मेरे साथ भी जुड़े हो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। हर एक टेक्स्ट कंटेंट के साथ एक अपना फोटो डालिए, अपना फैमिली से कुछ भी होता है, मतलब इट शुड बी योर फेस, पीपल शुड रिलेट टू यू हु इज राइटिंग दिस, राइट, है ना। तो लोग धीरे धीरे आपको वो करना करेंगे। अनिरुद्ध ने भी करा है, ट्राई मीम्स एंड बॉलीवुड मूवी शॉर्ट क्लिप्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके अनिरुद्ध, मैं आपको अपना प्रोफाइल लिंक दे देता हूँ, मैं इसमें चैट में ही डाल देता हूँ। सॉरी सॉरी सर, आपका नहीं, आपका है, मैंने फॉलो करके रखा है। मैं वो सर जो बात कर रहे थे अच्छा उनका अच्छा, बोल रहा उनका था। उनका ओके ओके, अंशुल जी आप अपना शेयर कर दीजिएगा प्रोफाइल लिंक, अनिरुद्ध विल फॉलो यू। ओके, अच्छा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये जो अनिरुद्ध आप बोल रहे हो ना, मीम वगैरह फॉलो करने के, रील्स बनाने की, तो इसमें कोई फीचर होता है क्या इंस्टाग्राम में जिससे यस हम यस, बहुत बहुत सारी चीजें हैं सर। उसमें बोलने के लिए अभी इधर टाइम मैं सर का ज्यादा लेना नहीं चाहता, तो मैं 2 मिनट में बोलता हूँ। बहुत सारे एआई टूल्स है और बहुत सारी वेबसाइट्स है एआई की। उससे आप फ्रीली वो कंटेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक सजेशन आपको मैं ये देना चाहता हूँ, क्या जैसे आपका हेल्थ निश है, तो उसमें से आपके जो भी टॉप इंडिया के 10 या फिर वर्ल्ड के टॉप 10 जो आपके निश में प्लेयर्स है, तो उनकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए। उनका कौन सा वीडियो वायरल गया है, क्या गया है। और सबसे बड़ी चीज रहती है सर टाइमिंग्स। आप जो टाइमिंग्स इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। आप अगर एक डेली 7 PM को डाल रहे हैं, तो आपका रीच अच्छा बढ़ता है। अच्छा, राइट। ऐसा कुछ है कि इंडिया में यस मतलब ऑफिस ऑफिस जब बंद हो जाता है उसके बाद ज्यादातर लोग देखते हैं? यस 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 सर। अच्छा। तो और इसको व्हाट, आपको सॉरी, 1 मिनट हाँ सर हाँ खाली। हाँ, प्लीज प्लीज करिए। और आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स है फ्री में। या फिर फेसबुक का जो अपना एड्स मैनेजर वगैरह रहता है, तो उसमें आप आपके नेक्स्ट 30 to 90 डेज के रील्स भी ऑटोमेट करके रख सकते हैं, कैसे करना है क्या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। सो थैंक मैं यू। इसको समराइज करता हूँ अंशुल जी, व्हाट अनिरुद्ध इज सेइंग। किसी भी निश में क्या होता है ना, इफ यू वांट योर कंटेंट टू परफॉर्म बेटर, यू नो रिसर्च अबाउट द टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन दैट पर्टिकुलर निश। वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं, या इसको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कहते हैं, राइट। आपके टॉप जो 5 कॉम्पिटिटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब और इन इन इंडिया, आप उनको रिसर्च करिए, देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कौन सा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट बेटर कर रहा है, आप उसको बस फॉलो कर लो। कॉपी नहीं करना है, उसी तरह की चीजें करो, आपका भी वो चीज आगे बढ़ जाएगा। ये एक हम्म प्रूवन फॉर्मूला है, प्रूवल स्ट्रैटेजी कह लो इसको, कि जो चीज काम कर रही है हम नया चीज क्यों करेंगे, वही चीज करेंगे तो हमारा भी काम करेगा ना। राइट। तो मैं एक्चुअली एक दिन पूछने वाला था कि किसने कितने ने लोगों ने कंपैरेटर एनालिसिस किया है। बहुत लोग नहीं करते हैं कंपैरेटर एनालिसिस, बहुत जरूरी है। मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स की रील्स वगैरह तो देखी हैं, उनसे मुझे काफी आइडियाज मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है एज राइट। सच वो
हम पूरा उनका आइडिया कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा नहीं बहुत नहीं, चेंज कर। कॉपी तो करना ही नहीं है। यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, मॉडल करना है। कॉपी एंड मॉडलिंग दोनों में डिफरेंस है ना, वो आप समझ सकते हो। किस तरह के ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, क्या मर्ज करके बना रहे हैं रील्स को, वो सब चीज। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कंटेंट भी जो वो बोल रहे हैं ना, आप उसको अपनी भाषा में बोलो ना, उनके वर्ड्स मत चुराओ। वो सब्जेक्ट समझ लो आप कि वो क्या सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, जो सब्जेक्ट लोगों को अच्छा लग रहा है उसी सब्जेक्ट में आप अपने हिसाब से बात करो, है ना। सब्जेक्ट राइट। पे कोई किसी का कॉपीराइट थोड़ी है, हम्म। बट उनके सब्जेक्ट तो बहुत। कंटेंट। हाँ सब्जेक्ट तो सेम ही सब्जेक्ट पूरी दुनिया बता रही है ना, लेकिन अपने हम्म। अपने शब्दों में बता रही है। तो लैंग्वेज आपका होना चाहिए, कंटेंट आपका होना चाहिए। तो वहां से आप मॉडल कर सकते हो इन चीजों को, विच विल हेल्प यू टू गेट बेटर ट्रैक्शन ऑन योर कंटेंट। चाहे कोई भी हो, रील हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। हम्म। और ये सब में काम करता है, यूट्यूब में भी काम करता है, इंस्टाग्राम में भी काम करता है, फेसबुक में भी काम करता है। इस सब प्लेटफॉर्म पे काम करता है ये चीज। मजे की बात ये है। ओके। राइट, गुड। एनीथिंग एल्स? सो देयर सो मेनी थिंग्स। मैं बोला ना, ऑर्गेनिकली आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो ना। और इतने सारे आज के डेट में तो फ्री टूल्स भी इतने सारे हैं कि आपको मतलब टाइम कम पड़ जाएगा 24 घंटा काम करते करते। और चीजें इतनी है करने की, आप लिटरली यू विल ब्लो योर माइंड। इसी वजह से बहुत सारे लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। तो दैट इज वेयर यू नीड टू डिफाइन आपका रास्ता क्या है, आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी। क्योंकि आप हर चीज नहीं कर सकता, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। सो यू नीड अ गाइड हु कैन टेल यू कि अच्छा अब आपने ये कर लिया, अब नेक्स्ट आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट। यदि आप चाहोगे कि एवरीथिंग पुट टुगेदर कि मैं एक साथ सारी चीजें कर लूं, तो फिर होगा भी नहीं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये तो शांति। आप। Look, sir, I wanted to ask one thing. या प्लीज। See, I was planning to post an ad on Facebook and Instagram and all. In that, like, I was planning to target US students also. ओके, So, is it possible? Like, can they transfer the money through Google Pay? Like, how do they transfer the money? देर आर मल्टीपल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज, राइट। इफ यू वांट टू Other टेक than पेमेंट। Tag Mango, see, even though I have Tag Mango, but I want to first improve, make money, then like completely go for Tag Mango. So now, like initially, like will they be able to do razor payments? Like, do I need to open an account? How is it? Yeah, I'll tell you. See, there are multiple payment gateways like this. Razorpay is one of them, which is India-based company, right? There are multiple other companies like you have, I know, Wise, you have PayPal, right? You have Stripe. These are all international payment gateways. InstaMojo and I think InstaMojo is also Indian. What do you think? InstaMojo and Razorpay are Indian payment gateway companies. And this Wise, PayPal, and Stripe, I told you, these are international payment gateways. So if you have to create an account over there, they don't charge you anything, but you need to submit your documents, right? So that internationally you can accept payments from there, right? Okay. So it directly gets to your bank account. जो भी कन्वर्जन रेट्स वगैरह होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता है। एंड दे टेक सम चार्जेस, वो सर्विस चार्जेस लेते हैं। मान लीजिए किसी ने यूएस से 100 रुपया भेजा, तो योर अकाउंट विल नॉट बी क्रेडिटेड विद 100 रुपीज, दिल डिडक्ट सम परसेंटेज, 2%, 3%, 4% कुछ उनका होता है। दिल डिडक्ट दैट मनी एज ए सर्विस एंड द रेस्ट ऑफ द मनी वुड बी अकाउंटेड टू योर, क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। So according to you, which one is the best one? Easy, just to start. सी स्ट्राइप, यदि इंटरनेशनल आप करना चाहते हो तो स्ट्राइप इज द बेस्ट। आई एम यूजिंग एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यूजिंग स्ट्राइप, Okay. राइट। And for Indian customers, you can use Razorpay or InstaMojo. तो प्रोसेस सबका वही है। Razor Pay, one more. Which one did you say? InstaMojo, InstaMojo, INSTA. MOJO. JO. Okay. So maybe if you have a company, they'll be asking about a GST number as well in India, because Indian norms, international payment needs to be, you know, perfectly done. So for that, you need to comply some statutory norms, right?
So they might be asking for all these documents. If you have all those documents, it will be, activated within 24 hours. I don't have anything as such. Okay, try doing it. See what all things they are asking, because I have a, phone pay is also there, but not for international payments. Indian payments के लिए तो आप GPay से ले सकते हो, Yeah. phone pay से ले सकते Indian, हो no किसी. problem. Only like international lens, how to do, I was thinking. Yeah, so for the international payment, you have to go through any of this. Try doing. आप दोनों पे अकाउंट बना सकते हो, पेपाल पे ट्राई कर सकते हो और स्ट्राइप पे बना सकते हो. See what all they are asking for, right? Okay. If you think everything is okay, whatever they are asking you have, so immediately they'll be activating your account. And if Okay. not, they'll definitely tell you what all things you are needing. You need to, create that account. Right? Okay. Even I for some time back I initiated my international payment in Razorpay. Razorpay में भी international payment का option आ गया. So since I have a company, full-fledged company, तो उन्होंने मेरा international payment भी Razorpay पे activate कर दिया. Right? Okay. So, because नहीं तो फिर वो हवाला का चक्कर होता है ना. They need to be, very clear that the money which you are getting in your account is from reasonable sources. Right? And it is accounted for. It is accounted for. Right? But there are ways. Try doing it. आपको पता चल जाएगा कि what all things maybe you would be needing, not for today, maybe in tomorrow. यदि आपको ये business करना है, तो आपको ये business को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपको शायद account खोलना पड़ेगा, GST number लेना पड़ेगा, kind of, if required. Yeah. Okay. Right? We'll try out. Sure. There are Thank you. there are ways. कुछ घबराने वाली बात नहीं है. Again, it depends upon what stage of business you are. And slowly you will see कि हाँ अच्छा धीरे धीरे करके ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. It's a journey. The more you start getting into all this, slowly and steadily it will happen. Not one day. Correct? Okay. Yeah, right. Good. Thank you so much. So anything else? If anybody has a question, or else we'll close, and we'll meet again next Saturday with some another training. Do good, everyone. Keep doing things, and yeah, thank you so much. Anirudh, take care as well. तबीयत का ध्यान रखिए, काम करिए. कोई जरूरत हो तो बताइएगा. We can have a discussion as you said, right? So we'll have again in a talk, right? Chalo, thank you so much, and looking forward to meet you again. Take care. Bye bye. Thank you. अंशुल जी, आप कुछ पूछ रहे थे क्या लास्ट टाइम? सॉरी, कुछ वो हो गया था. अंशुल जी, if your question is any question is pending? मैं ये पूछ रहा था कि क्या एआई एडिटर का कुछ नाम है जो आप बता रहे थे, अनिरुद्ध बता रहे थे? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का कोई नाम स्पेसिफिक है जो रील्स बनाने के लिए हो? VN editor is one. बहुत सारे हैं. VN editor is one. Even जो कल मैं आपको बता रहा था ना, vid.io, उससे भी आप कर सकते हो. CapCut है, Blink है. There are so many tools. बट वही ना, टूल्स को यूज करने पे धीरे धीरे आपको पहले दिन ही आपको सारे फीचर्स नहीं समझ में आएंगे. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स, यू विल सी अच्छा ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है. तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा जब आप उस टूल पे काम करना शुरू करोगे तो. राइट? ओके, थैंक यू. चलिए, सी यू देन. टेक केयर. हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. विल मीट अगेन सूनर. बाय बाय.